ये अगर मैं उस पे आऊँ नोट पे तो प्लस दबा दूँ जी रवि प्लस, तो दोबारा इस पे आना चाहूँ तो फिर अच्छा इधर से आना पड़ेगा, तो ये देख के ठीक है, ठीक, इसको देख के लाना पड़ेगा, है ना, विथ स्लाइड। हाँ हाँ ठीक है, ठीक, गुड, ओके। हाँ बोलो। क्वेश्चन है क्या है? हम्म, ये ये मैंने ये बताया था, दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इफ any economy is based on the market system, like we make our economy dependent on the market mechanism after 1991. We gave the larger role to market mechanism, but sometime market mechanism may not lead to efficient allocation of resources. Normally economics में ये कहते हैं हम कि if you allow the market forces to work, it will always lead to efficient allocation of resources. We always say that. We always say this fact. But there are certain circumstances where the market mechanism may not lead to the efficient allocation of resources. Because the market mechanism, the objective of the entrepreneur is to maximize the profit. So he may maximize the profit at the cost of society. It may create the social cost. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप पावर प्लांट लगा दिए and you are emitting the lot of carbon emission in the air. Air is being polluted. Therefore, but you are not paying for the pollution of the air. But air pollution is harming the health of the people living in the vicinity of the power plant. It means social cost is there. If you not regulate this power plant, then it will continue to add to the social cost. And he is not paying anything to the citizens living nearby for the health hazards. You are not paying anything. So here is the role. It means resources are not efficiently allocated. In this case, if you are creating any social cost, resources will not be efficiently allocated. And here is the role of the government. Government may regulate this power plant that you reduce your carbon emissions so that people are not affected. Or if you are creating, then you pay to the citizens. The government may create any kind of regulation or regulatory policy for the power plant. And here it will improve the allocation. ये मतलब ऐसा कहने का बहुत सारी इश्यू जगह पे not necessary that market mechanism will lead to efficient allocation. For example, second example, market mechanism may lead to inequalities. Market mechanism, what it says, it will create the demand for those who can buy the things. उससे क्या होगा कि inequality in society is rising, as in case of India. Inequalities are rising. But it is the role of the government to ensure that inequalities do not rise. Therefore, government intervention becomes necessary for equitable growth. The market mechanism sometimes may not lead to the optimal outcome. So, to bring the optimality in the outcome of the market mechanism, government intervention is necessary. But in most of the cases, in 95% of the cases, market mechanism leads to efficient allocation of resources. That is true. But only 5-10% cases are there where market mechanism may not lead to efficient allocation. In such cases, government intervention becomes necessary. Clear? तो इसलिए मैंने वो एक प्रिंसिपल ये है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन में समटाइम इम्प्रूव द मार्केट आउटकम. क्लियर?
8:30 हुए नहीं अभी, why people are not reaching? Okay. We were discussing the GDP, GDP in the last class, and we defined the GDP, 2-3 important thing in the definition. This is the sum of the values of final products produced. When I am writing products, it includes both goods and services. Goods and services produced domestically in the economy. Domestically. And in a given period of time. Given period of time. Three things are important in the definition of GDP. Sum of the value of final products produced domestically in a given period of time. It means only those goods and services which are produced within the geographical boundary of the economy are considered for the calculation or estimation of GDP. These are the final products, new and final products. Final products is important because only final products are counted in estimation of GDP. हम देखेंगे अभी आज what do you mean by the final products? It means the products which are intermediate in nature, which are considered to be input by some other industry, will not be counted here. Will not be counted here. I will give the example, but this is the initial definition. And when we say the value we defined yesterday is calculated both at the current prices as well as the constant prices or base year prices. Current prices and base year prices. Current prices is the prices which are prevailing at the time of estimation of GDP in the economy. And how do we know the current prices? We know the current prices in the form of wholesale price index or retail price index. Because wholesale price index, retail price index are published very frequently by the government. These will give you the idea of the prices prevailing. These prices are used to calculate the value of the products, final products in the economy. And since the price may rise over a period of time, which is normally a fact in developing countries, and to remove the price effect, we also estimate the GDP at constant prices. To define the constant prices, as I mentioned yesterday, we define the base year. We define the base year. And the prices prevailing in the base year considered to be the constant prices, and the GDP in the current year is also estimated at the base year prices. Therefore, the GDP at market prices or current prices means the value of the final products produced domestically in the economy in a given period of time at the prevailing prices. And when we say GDP at base year prices or constant prices, we say value of the products produced in the economy domestically in a given period at the base year prices. That is the difference. That is the difference between the two. And we publish both kind of estimates in India. All the countries are published both kind of estimates, the current prices and constant prices. We can actually see how much is the real growth in the GDP. When we compare the real constant prices
we see how much real growth has taken place in the given period of time. We have removed the impact of prices, because sometimes price may increase, actual product may not increase, but total value may increase. Total value किसी product की P into X है ना, price into quantity. That is the value. That is the value of any product. Price into quantity. Price into quantity. So sometimes quantity may remain constant. Suppose this is the one period, this is one period. In two period, price may increase and it remain Q1. Value will increase because P2 is more than the P1. Value may increase, quantity may not increase. So real GDP will not increase, only nominal GDP will increase. That's why to remove the price effect, we measure the GDP at the base year prices. यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमने कल किया था यहाँ तक. कल मैंने फॉर्मूले लिखे थे. अगर आपको फॉर्मूले से किसी को परहेज है तो डोंट लुक एट देम. हाँ, नहीं समझ में आया था. मैं उसको फॉर्मूले में समझाया थी, कोशिश की थी. वो easy to remember. That is easy to remember. But if somebody is facing a problem in understanding that, not required. For example, मैं समझा देता हूँ, जिसको समझ में आ जाए बढ़िया. नहीं समझ में आया तो लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट. चलिए, सपोज देयर आई प्रोडक्ट्स, number of products in the economy are indicated by I, and I varies from 1, 2, 3 up to n, natural numbers. There may be any number of products in the economy. I is the indication, is symbol, and I represent the 1, 2, 3, 4, 5 up to n. And suppose Xi indicate the quantity of the product, quantity of the product produced in the economy. ठीक है? And here, जैसे मैंने कहा, I this may be Xi may be X1, X2, X3 up to Xn. The quantity of products of n product. Q of n products in the economy. ठीक है? Corresponding to n product, we will be having the same prices. Therefore, Pi will be prices of n products in the economy. N products in the economy. ठीक है? जब हम इकोनॉमी में सबको मल्टीप्लाई, सारे एक्स आई को पी आई से मल्टीप्लाई कर दे, वैल्यू आ जाएगी. जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि एक्स आई इंटू पी आई विल बी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स आई एट करंट प्राइसेस, आई करंट प्राइसेस, and I may be 1, 2, 3, 4, 5 up to n. For example, X1 P1 is the value of the first product, X2 P2 is the value of the third product. इस तरह से you have the list. इसको हम normally लिखते इस तरह से हैं. ये सिंबल सबको पता है, समेशन. दिस इज समेशन. ये तो सबको ही पता होगा. We write Xi into Pi. And here we write I varies from 1 to n. तो इतना सारा लिखने की बजाय you write here, this is the value of products produced, value of products produced in a given year, which varies from 1 to I, 1 to n. This is we calculated at current prices. Now we want to remove the price effect. What we did is, we did nothing else, but we use the same Xi produced in the current year, but use the prices of base year, I0. इधर मैं लिख रहा हूँ I1.
I0 मीन बेस ईयर प्राइसेस, कुछ चेंज नहीं किया हमने, सर प्राइस चेंज कर दिया सर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पी फॉर करंट प्राइसेस आई एम यूजिंग PI0। हाँ, सभी के लिए बेस ईयर। इट विल गिव यू दी I from 1 to n सेम है, only change is this, and this will give you the value, this is at current prices and this will be at base year prices। बेस ईयर प्राइसेस ज़्यादातर हम बेस ईयर को जीरो से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में, जीरो बेस ईयर प्राइसेस। तो सेम थिंग आई wrote in a formula which you can remember easily, ठीक है। अदरवाइज दिस इज अगर ना किसी को समझ में आया तो यू फॉरगेट, यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स, फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट करंट ईयर प्राइसेस। इतनी एक लाइन याद रखनी है आपको, GDP, वन लाइन यू हैव टू रिमेंबर। ये नहीं आता समझ में, छोड़ दो। दोज हु कैन अंडरस्टैंड इज बेटर, दो डू नॉट, you can forget. This is only for the additional knowledge for you. Clear? UPSC के answers में no equation is required, no mathematics is required. Of course, economics is highly mathematical subject today, but fortunately, UPSC doesn't require any mathematical equation in the answer. They will prefer you may use the diagram, but don't use the mathematical equation. So ye I don't know any one of you having the economics option or not, but if you have the economics option, that I'll take here also, then we will say that of course the equations will be used in explaining the economic phenomenon, but at the same time we will also use the diagram. And UPSC will prefer to use the diagram. डायग्राम के दो एडवांटेजेस हैं, एक तो नंबर ऑफ वर्ड्स विल बी रिड्यूस्ड, आपको आंसर 200 वर्ड्स में लिखना है मेन में भी, तो डायग्राम बना दी तो आपको उसका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, तो दे प्रेफर द डायग्राम्स। तो इकोनॉमिक्स में बहुत डायग्राम्स से हम एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, तो समटाइम्स ये छोटी मोटी इक्वेशंस हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। अंडरस्टैंडिंग शुड बी परफेक्ट। अगर आपको समझ में चीज़ आ गई है तो आप किसी भी, फिर इंग्लिश लिखने की बात रह गई, फिर ओनली राइटिंग द करेक्ट इंग्लिश, दैट इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू लर्न, बट यू कैन लर्न और राइट द करेक्ट इंग्लिश ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड इट, और अदरवाइज आप गलत लिखोगे। दैट्स माई फोकस इज ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, और मेकिंग यू अंडरस्टैंड आई मे यूज द डिफरेंट रूट, मे बी फॉर्मूले, मे बी डायग्राम, मे बी समथिंग एल्स to make you understand, but not necessarily all these to be used in the answer writing. In answer writing, you will use your effective language, and जैसे मैंने कल भी कहा था, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, टर्म्स हैं। इकोनॉमिक्स यूज़ करेंगे तो इकोनॉमिक टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी विल फाइंड कि आपने इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ किए हैं कहीं या नहीं किए हैं, दे विल गिव द मार्क्स ऑन देम, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखनी है आंसर लिखते हैं। जब आप आंसर मुझे देंगे, जैसे ने दिया है मुझे, तो मैं तो बताऊंगा कहाँ प्रॉब्लम है कहाँ नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे 4-5 असाइनमेंट के बाद यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ। वो इम्प्रूवमेंट में चाहिए, दैट विल कीप ऑन एडिंग ईयर आफ्टर ईयर और मंथ आफ्टर मंथ, तो आप जल्दी से फिर सिलेक्शन ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो आपकी जो फोकस है वो राइटिंग पे होनी चाहिए। पढ़ना और गुनना दोनों अलग अलग चीज़ें, हिंदी में गुनना बोलते हैं, समझते हैं ना उसका आप, तो वो बहुत ज़रूरी है। गुनना मीन्स अंडरस्टैंडिंग। पढ़ तो सब लेते हैं, न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हो आप, कितने लोग रिटेन कर पाते हैं? नथिंग, रिटेंशन है ही नहीं, क्योंकि आप उसको समझते नहीं हो, गुनते नहीं हो। जिस चीज़ को गुनना शुरू कर दो, कोई याद होनी शुरू हो जाएगी अपने आप। अंडरस्टैंडिंग इज मस्ट। और आपको आर्टिकल होता है 4 कॉलम में, उसमें क्रक्स निकलेगा 3-4 लाइन का, वो आपको समझ में आ गया तो पूरा आर्टिकल आपके लिए बेकार है। 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से।
वो चाहिए मुझे आप में. You should be efficient enough by the time we finish this course that you should be able to read the economic news in the newspaper and understand what they are saying. Understand what they are saying. आज जैसे अखबार में आया कि इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हो, अखबार में पीपल आर होपफुल अबाउट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बट दे आर नॉट होपफुल अबाउट द इन्फ्लेशन. ये सर्वे किसी ने किया एंड ही केम टू द कंक्लूजन that people in India are hopeful about income and employment in future. Income भी बढ़ेगी, employment भी बढ़ेगा, but they are not hopeful about the containment of the inflation. तो ये समझ में आना चाहिए आपको as a student of economics what he is trying to say. On what basis he is trying to say that income and employment is not a major problem in India. The major problem in India is the inflation. On what basis they are saying? ये आपको समझने आना चाहिए. जब आप इस कोर्स को ख़त्म करेंगे तो आई होप व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर यू अंडरस्टैंड व्हाट द न्यूज़ इज टेलिंग यू, बिकॉज इकोनॉमिक फिनोमिनन इज टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑन डेली बेसिस. डेली नई नई चीज़ें आ रही हैं डेली, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देम. सबका प्रिंसिपल, सबका क्रक्स एक ही है. ये प्रिंसिपल है. अगर वो प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया तो अब कोई भी न्यूज़ समझ में आ जाएगी. क्लियर? कल टीवी पे डिस्कशन था स्टेट्स के डेट के ऊपर. आपने किसी ने सुना हो तो स्टेट डेट पोजीशन, हर स्टेट्स की डेट बढ़ती जा रही है. पर्टिकुलरली आफ्टर द इलेक्शन दे हैव गिवन लॉट ऑफ प्रॉमिसेस टू गिव फ्री टू द पब्लिक, फ्री बस राइडिंग फॉर द फीमेल्स, वीमेन. द गैस सिलेंडर 450 rupees, 1250 rupees to be transferred in every women's account. All these freebies, but what will be implication of these expenditure of the government? The government expenditure will have to rise. If government is not having corresponding revenue to finance this expenditure, then what will be the impact? Government has to raise the debt. जैसे नॉर्मली हम हाउस होल्ड में करते हैं. आपकी इनकम है, आपने घर खरीद लिया, आपसे इनकम की 4 गुना ज़्यादा. आपने 5 करोड़ का घर खरीद लिया, आपकी इनकम 1 लाख रुपए. What will you do? You have to take the lot of debt. So the government has to take a lot of debt. But debt income ratio is very important to assess the health of the person, health of the economy. अगर आपने वो अपने ऊपर 5 करोड़ का डेट चढ़ा लिया, इनकम आपकी 1 लाख रुपए है, तो यू विल बी अंडर द सीवियर डेट पोजीशन. उसका इंटरेस्ट इतना जाएगा कि आपकी इनकम की 20-30% विल गो एज ए इंटरेस्ट एवरी मंथ. दैट विल रिड्यूस योर इनकम. वही गवर्नमेंट के साथ है. इफ गवर्नमेंट इज टेकिंग डेट फ्रॉम द मार्केट विच इज 80-90% ऑफ योर इनकम, जो आज सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट आपको यू विल बी सरप्राइज टू नो 90% ऑफ जीडीपी, 172 लाख करोड़ का डेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर. 172 लाख करोड़ है. पर पर्सन डेट निकाल लो. 172 लाख करोड़ को 144 करोड़ से डिवाइड करो तो 1 लाख से भी ऊपर आएगा पर पर्सन. इससे ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर पर्सन डेट आप थोड़ी दे रहे हो डेट को. अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू रीपे द डेट. द इम्पॉर्टेंट इज दैट गवर्नमेंट की इनकम का 46% इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है. अगर गवर्नमेंट इज अर्निंग 100 रुपीज थ्रू टैक्सेस, उसका 46 रुपीज इज being used for payment of interest on the debt of 1,72,000 crores. 1,72,000 crores का monthly interest इतना है, annual interest इतना है. The government has to pay. अगर गवर्नमेंट 46 रुपये 100 में से इंटरेस्ट पेमेंट कर देगी तो 54 रुपये में गवर्नमेंट हैज टू मैनेज द अदर थिंग्स which government is unable to do. Therefore, they will take further debt. This is called the debt crisis. डेट ट्रैप में गवर्नमेंट फंस गई. डेट ट्रैप में गवर्नमेंट फंस गई. अब डेट ट्रैप को कम करने का एक ही तरीका है, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर. और कोई तरीका नहीं. हाउ द गवर्नमेंट विल डू, वी विल डू एंड विल डू द बजट एनालिसिस. ओके, तो कमिंग बैक टू दिस जीडीपी, समझ में आ गया जी? हाँ जी. डिफ्लेटर, हाँ कल मैंने ये बताया था आपको कि जो प्राइस इंक्रीज हुआ
मान लिया द प्राइस हियर, इंडेक्स के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स ऑफ द प्राइसेस इज 100 हियर एंड हियर 150 हो गया, प्राइसेस 50% बढ़ गए जिस साल में आप जीडीपी एस्टिमेट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बेस ईयर प्राइसेस, द प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय मोर देन हाफ, 150 हो गए, तो 50% increase in prices. It means the current year GDP will be reduced by 50% value because the only price effect has to be removed. And this 50% is called deflator of the GDP. How you calculate it is very simple. आप इनको दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, PI I1 XI divided by 0 into xi, this will give you deflator. This will give you deflator. इसमें देखो इस फॉर्मूले में ये तो सेम ही है, only difference is the prices. So ratio of prices will give you the deflator. Will give you the deflator by which rate the current GDP will be deflated because of increase in prices. अगर प्राइस कम हो गए, it will be inflator. मान लिया प्राइस इंस्टेड ऑफ 150 प्राइस remains, price index remains 75, that will be a deflator, inflator. तो वो करंट ईयर जीडीपी को बढ़ाएगा. करंट ईयर जीडीपी will increase as compared to the base year GDP. So this term normally is used in economics, deflator. Deflator is used only when the price have increased, but never price have decreased. The history never says the price have decreased. Price always increases. So therefore, the deflator word is more common than the inflator. But sometimes if prices have reduced, then it will be an inflator. It will inflate the GDP, and deflator will deflate the GDP. जैसे पहिए से हवा निकल गई, डिफ्लेट हो गया ना, वही टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे, डिफ्लेटर और इन्फ्लेटर. हाँ जी, कम होएगी, करंट ईयर जीडीपी कम हो जाएगी. हैं कैसे? तो आप देखो ना, प्राइस यहाँ हर चीज को 150 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक्स आई को आप 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे सारे एक्साइज को, x1 x2 x3 x up to xn, प्राइस इंडेक्स 150 है सब. तो ये मल्टीप्लाइंग द xi बाई 150, तो जीडीपी आ गई पी आई इंटू 150, 150 इंटू xi, आपकी जीडीपी आ गई करंट ईयर में. बट वी आर कैलकुलेटिंग जीडीपी एट द बेस ईयर प्राइसेस ऑल्सो. बेस ईयर में प्राइसेस थे 100, कम थे, आपका xi रिमेन्स द सेम, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से, तो करंट ईयर की जीडीपी बेस ईयर प्राइसेस की और रियल जीडीपी विल बी लेस देन द नॉमिनल जीडीपी. यहाँ 150 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. सपोज एग्जाम्पल ले लो, तो xi इज 100, xi इज 100, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 100 को 150 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आया. यहाँ आपने इसमें आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो विच वन इज मोर? 100 तो सेम ही है, ओनली प्राइस हैव चेंज्ड. यहाँ पे 1.5 लाख आ गया, 1 लाख आ गया, तो जीडीपी हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस. वी वांटेड टू रिमूव द प्राइस इफेक्ट. जीडीपी में दोनों चीज़ें शामिल हैं. जब जीडीपी हम मेजर कर रहे हैं करंट ईयर में, उसमें क्वांटिटी इफेक्ट भी है और प्राइस इफेक्ट भी है. क्वांटिटी इफेक्ट इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रियल प्रोडक्शन, एंड प्राइस इफेक्ट इज कमिंग फ्रॉम इंक्रीज इन प्राइसेस. आपने जैसे मैंने बताया कि 4000 कारें प्रोड्यूस की, 4000 कार, और प्राइस था 150. बेस ईयर में भी 4000 कार प्रोड्यूस की, प्राइस था 100. अगर आप 100 प्राइस को 4000 पे अप्लाई करेंगे करंट ईयर में, तो वैल्यू कम हो जाएगी. तो इसलिए जब भी प्राइस इंक्रीज होगा और उसे हम बेस ईयर पे कन्वर्ट करेंगे, जीडीपी वैल्यू विल बी रिड्यूस, और रियल बेस ईयर जीडीपी विल गिव यू
रियल इंक्रीज इन आउटपुट, क्योंकि हमने प्राइस इफेक्ट को रिमूव कर दिया, हमने वही प्राइस यूज किया जो बेस ईयर में प्रिवेलिंग था। तो प्राइस इफेक्ट को आपने खत्म कर दिया, तो इफेक्ट कहाँ से आया जीडीपी में? ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन क्वांटिटी, दैट इज द रियल जीडीपी। वी आर इंटरेस्टेड इन इंक्रीजिंग द real quantity of the products. We are not interested in raising the value of the products. Value of the product may increase because of price change. We don't want that the nominal GDP only reflect the price change. We want that how much real output has increased in the current year as compared to base year. That is the real GDP. And that will improve your welfare. That will improve your standard of living. Only increase in prices will not raise the standard of living. वही तो मैंने बोला स्टेटमेंट अभी आज का कि people are more worried about the inflation, not about the income and employment, because rising prices will always hurt your welfare, will always reduce your consumption. जब कंजम्पशन घटेगा तो आपका वेलफेयर कम होगा। हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया। जैसे आप देखो अभी 2 महीने पहले टमाटो वॉज 200 रुपीज़ पर केजी, तो एवरीबडी रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ टमाटो। आप एक घर में मान लिया 2 किलो का कंजम्पशन था, तो आपने रिड्यूस टू हाफ के जी। उससे क्या है कि आपका योर वेलफेयर इज रिड्यूस्ड, योर कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस। So whenever the price rises, it impacts your consumption. And when your consumption is affected, your welfare will be affected. Welfare will be affected. क्यों? क्योंकि purchasing power घट गई आपकी। Price rise will impact your purchasing power. आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, 1 लाख रुपए इनकम से कुछ सामान आप खरीद सकते हो एट द गिवन प्राइसेस। प्राइसेस बढ़ गए, आपकी इनकम नहीं बढ़ी। Now you can buy the less quantity of the same product because prices have increased. Example दिया मैंने टमाटो का, तो उससे क्या होगा कि आपकी consumption will reduce, and consumption will reduce, your welfare will be reduced. Welfare is a direct function of the consumption. Standard of living is a direct function of the consumption. If somebody is hurting your consumption, maybe the high taxes, maybe the high prices, both will reduce your welfare. Therefore, high taxes are also not favoring the welfare unless government uses the tax revenue for welfare purposes. But the person who are paying the taxes may not be the same who is getting the government benefit. They are different. Therefore, overall welfare will reduce if government imposes very high taxes. So therefore, tax has to be reasonable rate. आपको, I don't know whether you are aware or not, in 70s and 80s, the marginal rate of taxation in India was 95%. 95% was the rate of taxation in India. It means additional profit income earned, and 95% you have to pay to the government as a tax. And that was hurting all, either salary earners as well as the profiteer class. The government realized that instead of raising the GDP, it is reducing the GDP. Therefore, government started reducing the tax rate. And today the marginal rate of taxation is 33%. 33%. And government, आपको याद हो अभी 2019 में गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 30% से 25% किया, रिमेंबर, और उसको फिर घटा के न्यू स्टार्टअप के लिए उसको घटा के 22%, 20% कर दिया। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट वांटेड इन्वेस्टमेंट टू राइज, और इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगा जब टैक्स रेट कम होगा प्रॉफिट में। तो ये सारी चीज़ें विल डिस्कस व्हेन वी गो टू द फिस्कल इकोनॉमिक्स, बट हियर इंपॉर्टेंट इज द प्राइस राइज. Price rise is adversely affecting your welfare. Therefore, we are not interested in increasing the value of GDP mainly on account of rising prices. We want to see whether real output has increased or not. That's why we construct or estimate the GDP
both at the current prices as well as base year prices. And base year prices, when we calculate the current year GDP, that will give you the indication to what extent GDP has increased on account of increase in real output. ये चीज बिल्कुल conceptually clear होनी चाहिए. कोई डाउट बेटा? You all asking something? हो गया? इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं? Clear? Now, so far we were only considering the GDP. That is, we are only concerned with the output produced within the boundary of the country. But that is true for closed economy. This concept is very true, very important for closed economy. When economy is not having any international economic transaction. But that is not feasible in today's environment. In today's economic environment, all the economies of the world, all are open economies, including India. When you open up the boundary of the country for economic transaction, and what will be effect? What will be effect? Effect will be that some of the domestic production will be exported by us. Some of the domestic production will be exported by us. And some of the imports will come to you. Some of the imports you will do to increase your consumption. Number one. Second thing is investment will go in, go out and go in, flow out and flow in. And when you open up the boundaries, the others would like to invest in the India's economy. That we call the foreign investment. And our business persons may also like to invest in other countries if they find that it is giving the higher return. Therefore, when the economy is opened up, it will have to impact, essentially to impact, others will consider later on. Immediate impact will be the flow of investment will rise, either inflow or outflow, and exports and imports will also take place. Exports, open economy. Now, we are considering the open economy. GDP is true for the closed economy. If economy is open, open का मतलब है कि you open up your geographical boundaries for economic transaction, not for military or any other transaction, only for economic transaction, pure legal economic transaction. Therefore, the open economy is there. When economy is opened, then two phenomena will take place. That is, trade will improve. Trade takes place. Trade will take place. Trade will take place with rest of the world. With ROW. ROW is used rest of the world. A standard term. अब एग्जाम में यूज कर सकते term ROW, rest of the world. India will have the trade with rest of the world, all other countries. So the first thing. And second important thing will be foreign investment will come. Foreign investment will take place. Foreign investment. It will be outflows as well as inflows. Both flows will be there. Foreign investment will take place. And foreign investment we normally defined in three terms: FDI, FPI, and FII. Three types of foreign investment will start coming or going from the country. These have to be accounted for in the GDP. When we account for these transactions in GDP, GDP becomes the GNP. GDP becomes the GNP, gross national product. Gross national product.
instead of domestic we call national product. Clear? How do we take this into account? How do we take economics honors? आपने कर किया ना? कौन से कॉलेज से किया है? SRCC से? तो फिर तो यू मस्ट बी नोइंग. मैंने हिंदू कॉलेज से की थी बहुत पहले, आपसे 73 में है. क्वेश्चन मेरा ये है, these transactions, international transactions will have to be taken into account while calculating the GDP. GDP will become GNP. We will not call it a GDP, we will call it a gross national product. Everything remains the same जो हमने GDP में देखा है, पर ये दो टर्म ऐड करनी है वहाँ पे. How will you do it? प्लस नहीं, क्या क्या प्लस करेंगे बताओ ना. और इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, प्लस करेंगे? माइनस करेंगे. और इन्वेस्टमेंट, ये टर्म क्लियर है आपको सबको? FDI, FPI, FII? नहीं क्लियर है. Foreign investment may come to your economy in either of the three ways, or foreign investment go out of the country in either of the three ways. When we say foreign direct investment, it means the investor is coming here with physical investment. He will set up the industry or plant here to manufacture the goods. He will bring technology with itself. He will bring the plants and machinery along with technology, and they will set up here the plant. For example, Samsung has come, Hyundai has come, LG has come, Honda has come. All these companies have come here. They set up their production units here and they invested here, and therefore this is called foreign direct investment. When investment is coming with the fixed investment in the form of plants and machinery and along with the technology, then it is called foreign direct investment, FDI. This is called foreign direct investment. But when the foreign investors are not interested in physical investment, they are only interested in participating the ownership of the plant, and they only want to buy the equity of the share or equity of the company. That is called foreign portfolio investment. Foreign portfolio investment. For example, suppose the Tata is establishing here a plant, and the UK Energy wants some equity in that, and this says the 20% equity we will buy from you, 80% will be your investment, 20% we will share. Then it is a foreign portfolio investment. Foreign investment has come, but not in the form of the physical investment. It has come in the form of the equity investment. They are sharing the cost or investment, but not the physical investment. The Tata investment, Tata management will decide how will they do. They will only share the money. No, वो FII है. That is the third one. There is a primary market. When they are buying the equity directly from the company, that is a foreign portfolio investment. That is foreign portfolio investment. But when the foreign investors, to earn the quick benefits, buy the shares from the secondary market, that is stock exchange, which he is talking about, that is FII, foreign institutional investors. They are not interested in profit or of the company. They are not interested in physical investment. They want to earn the benefit because of market changes, stock market changes. And if they do that, that is short-term investment.
they buy the shares of a company from the stock exchange. Stock exchange में दोनों तरह की shares हैं, secondary shares भी हैं और primary shares भी हैं, दोनों. They are more interested in secondary shares. आज उसने खरीदे, 3 महीने बाद बेच दिए, and the price rose, they have sold off. That is called FII. They can purchase, but they are purchasing secondary market. They are not buying original the PIO. ये समझते हो ना आप? Initial offer. Initial offer, they are not buying that. They are only buying the shares, either equity or debentures or preferential shares from the secondary market, that is stock exchange. That is stock exchange. दो तरह के shares हैं. ये जो कंपनी डायरेक्ट फ्लोट कर रही है एज द इनिशियल ऑफर, the portfolio investors are interested in that. They are interested in that. They permanently they want to invest and they want to earn the profit out of the investment in the equity shares, because they will be sharing the profit of the 20%, because they are investing 20% of the total investment. They are buying that. But there are some foreign investors, they are not interested in the long-term investment in any company. They want to gain the short-term gains. They want to maximize their short-term profits. And short-term profits can be maximized only when they look into the stock exchange fluctuations, stock market, and therefore they keep investing and withdrawing from the stock market. And they invest in those shares which are likely to rise in future as per their estimates. And when they rise, they sold in the market and take the profit. And they further invest in other shares. If this kind of investment is coming, then we have a FII, foreign institutional investors. They are interested only in the secondary market, that is stock exchanges, and they earn out of the fluctuations of the share prices in the stock market. हाँ बेटा. Yes. If they are buying the 20% equity share in any company, they are keeping it with themselves. They will get the 20% share in the profit. Because ownership, equity is ownership. Equity is always ownership. Debenture is a loan. इन दोनों में डिफरेंस मालूम होना चाहिए आपको. दो तरह के शेयर्स हैं, इक्विटी, डिवेंचर्स. डिवेंचर्स इज द लोन. जो those who are buying the debentures, they will not be sharing the profit. They will be getting the fixed income by their investment in the debentures. But those who are buying equity, they will be sharing the loss as well as profit, both. This is the difference. This is the difference. Some companies may be interested only in fixed income. They are not interested in fluctuations. They will invest in debentures. And some companies are interested in profit. They will buy the equity shares. So equity and debentures are two different kind of shares floated in the initial offer also, as well as they are listed in the stock exchange also. Clear, तीनों investment? Which one? Third one. मैं वही बता रहा हूँ आपको. एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैंने बताया कि सपोज बिग इंडस्ट्रियल अंबानी हैज सेट अप ए वन प्लांट हियर एंड ही issued the initial offer to the public, and that is, बड़ी कंपनी है तो they always offer the international. The initial offer, initial shares are floated internationally. Therefore, some foreign investor may be interested in Ambani's plant. So they set up a renewable energy plant, a wind energy plant in Chennai, big plant, and 1,000 crores are invested. And they floated the initial offer, giving the details of the plant. Maybe some foreign investors also interested
in buying the shares of the Ambanis in this particular plant, because this is a rising sector, and they buy some equity directly from the initial offer. Then they will be having the share in the profit of the company also, or loss of the company also. So 20% if they buy, 20% ownership lies with them, 80% lies with the Ambanis. Clear? This is called initial offer. If the same share after 1 year, when initial offer is over, same share is listed in the stock exchange. Same share is listed in the stock exchange. हाँ जी, नहीं, इनिशियल ऑफर खत्म हो गया. इनिशियल ऑफर तो 2-3 दिन 4 दिन के लिए आएगा सिर्फ. 4 दिन के अंदर जो खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा तो कोई बात नहीं. Then they will list if the company wants more mobilization resources. अभी इनिशियल ऑफर फुली प्रोवाइड नहीं किया. आपने 10,000 करोड़ के या 50,000 करोड़ के शेयर इशू किए, बट द सेल हुई इनिशियल ऑफर में से 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ मोर टू बी mobilized. Then what the company will do after initial offer period is over, they will list in the stock exchange. You can buy from the stock exchange also. So some institutional investors, they may buy from the stock exchange. That is the secondary market. Primary market and secondary market. जी भाई, ऑनलाइन वाले भी बोलो ना, आप आवाज़ ज़रा बढ़ा के अपनी बोलो, मुझे समझ में आ जाएगी. आपका क्वेश्चन सबको समझ में आ जाएगा. प्लीज़ डोंट राइट इन दिस, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ भी. आप अपने को अनम्यूट करके, कैमरा ऑन करके आस्क द क्वेश्चन. बोलो. अनम्यूट करके कैमरा ऑन करो एंड आस्क द क्वेश्चन. दैट इज द बेस्ट वे टू इंटरेक्ट. Unmute yourself, raise the voice and ask the question. Bolo, I have already unmuted, but your voice is not coming to us. आप बोलो ना, अनम्यूट करके बोलो, तभी तो आवाज़ आएगी. क्योंकि वॉइस पाओगे ज़रा. क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? ये देखिए, इक्विटी में तो आएगा वो इन्वेस्टमेंट में आएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो फ्लो होगा. इन्वेस्टमेंट विल नॉट बी काउंटेड इन जीडीपी और जीएनपी. Only income generated from the investment will be counted in GDP. अभी ये बता रहा हूँ उसको. भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. नाउ जी, इक्विटी का मतलब, इक्विटी होती है, आज आपने सपोज 10 रुपये का या 20 रुपये का 50 रुपये का शेयर कंपनी ने इनिशिएट किया, तो जितने भी आप शेयर खरीद लोगे, आपने 1% शेयर खरीद लिए, मान लीजिए कंपनी की वैल्यू है 1 लाख करोड़ है, और आपने शेयर खरीद लिए मार्केट में 1% के बराबर, तो आपकी ऑनरशिप कंपनी में 1% के इक्विवेलेंट है. ठीक है. और डिसीजन मेकिंग में आपको, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कंपनी के, मिनिमम शेयर यू हैव टू बाई 26%. वो गवर्नमेंट का रूल है, जो हमारे कंपनी एक्ट है उसमें रूल है. इफ़ यू रियली वांट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी, then minimum share you have to have 26%. अगर आपने 26% से कम खरीदे हैं तो ऑनरशिप आपकी उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है, और यू विल गेट द प्रॉफिट इन अकॉर्डेंस विद द परसेंट ऑफ शेयर यू आर होल्डिंग. अगर आपने 1% शेयर आपके पास हैं तो कंपनी के प्रॉफिट का 1% विल रीच टू यू, बट यू विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग के लिए 26% शेयर आपके पास होने चाहिए. ओनली देन यू कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द कंपनी. तो ये सारी निटी ग्रिटी आप बाद में पढ़ेंगे जब इंडस्ट्री में पहुंचेंगे. यहाँ से मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि व्हेन वी कैलकुलेट
the income of the country, we have to take into account the exports and imports as well as income generated from the foreign investment. तो अब क्वेश्चन ये है कि हाउ द इनकम फ्रॉम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल बी काउंटेड इन द जीडीपी which we now call GNP. You see that when we call the GNP, it will be like this. बेटा इनकी आवाज़ नहीं आ रही ना यार. हेलो ऑनलाइन पीपल, लिख के भेजा है यार. लिख के भेजने में बड़ी मुश्किल है. ये टाइम बहुत वेस्ट होता है ना. इन केस ऑफ द ओपन इकोनॉमी, net factor income from abroad will also be added. Yes, ये मैं आ ही रहा हूँ इसके ऊपर. अभी आप क्वेश्चन वो पूछ रहे हो जो मैंने अभी शुरू नहीं किया. प्लीज रीड द क्वेश्चन. पढ़ लिया मैंने. वो मैं जो आप बोल रहे हो ना बेटा, वो मैं अब आ रहा हूँ उसके ऊपर. आई एम कमिंग टू दैट. नाउ द GNP is equal to GDP, whatever GDP you have calculated in whatever method you have calculated, plus exports minus imports. X is always used in economics for exports and M is used for imports. Exports and imports. Number one, they are added. They are added to your GDP. And it will give you GNP. First, the trade is taken care of. Exports is added because some part of the domestic production is exported by you. It is not consumed by our natives, our citizens. It is consumed by the foreigners. And therefore, exports is added to GDP. Imports is subtracted from the GDP, because when imports is coming to you, you are paying for the imports. Income is flowing out from the country, and therefore imports are always taken as a negative. Normally, we take in net exports. This term is called net exports. X minus M is called net exports. Net export may be positive or may be negative. Net exports. When we add the net exports to the GDP, it will become GNP. 1. When we incorporate into income earned from the investment abroad or investment made in India, that is, the net income has to be earned. When we are investing abroad, we are getting a return from that investment, and those foreigners who are investing in India, they are getting a return from investment from India. For example, German company has invested here, so they will be getting the return on the investment. That will be counted in that country's GDP. Because when we take the income from the assets, we want to see who owns these assets. That will determine where this income generated from the asset will be counted. This concept you need to understand. इस पे क्वेश्चन आता है normally, यहीं पे confusion है. In case of GNP, income generated from the investment to be included in GNP or not will depend upon who owns the assets or investment. Who owns the investment? उनकी कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा इस पर. आगे जाके पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ लूँगा. मेरी आवाज़ तो जा रही है उनके पास? ठीक है, ये जा रही है ना? अब ठीक है, आप उसको मैक्सिमम कर दो, उनको फिर अच्छी सुनाई देगी. तो when you decide which income from investment to be included in the GNP or which is not will depend upon who owns the investment.
if investment is in India is owned by some foreign company, then the income generated from that investment is flowing out from the country. Apart from the Government of India restrictions, वो सब लगेंगे, but apart from that, the income will be flowing out, and that will be counted in that country's GDP. An example दिया, if German investors are investing in India and they are getting return from this, income generated is flowing out from the country, that will be counted in Germany's GDP, not in us. हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन अगर FDI आया और कंपनी यहाँ पे इंडिया में खोली, फॉर एग्जाम्पल सैमसंग और LG, they opened Samsung India Limited. Company is registered with the registrar of Indian companies. Then it has become an Indian company. Then the income generated from the investment by Samsung in India will be counted in India's GDP. ये थोड़ा confusion है, समझ लो इसको. हाँ, in our GDP or GNP. Therefore, in GDP, we are more concerned about where the output is produced, that is domestic. In GNP, we are not concerned where the output is produced. We are concerned who owns the investment, who owns the assets. And based on that, we decide where the income generated from the asset will be counted, in our GDP or in other countries' GDP. It should be very, very clear. Yes, जैसे मैंने कहा, foreign investor आया, permanently they have come here, they registered their company here. FDI में सारा investment यहाँ पर registration होगा. FDI will be possible only when the investor decided to set up a company here. So they are coming with whole plants, machinery, technology in the company. They can't do investment unless they registered with the Registrar of India's Companies Act. So we have a full office of Registrar of India's Companies, and therefore they have to register their company here. Now the India owns these assets. Of course, assets is made by them, but the company is registered in India. Company is registered in India, and therefore the profit generated by this investment after the Government of India regulations. Government of India ने कुछ permission दे रखी है, 10%, 20% they can outflow. Rest they have to reinvest in India, and that will be counted in India's GDP or India's GNP. Therefore, in GNP, when we see the income generated from investment, we are not concerned where it is produced, where it is invested. We are only concerned who owns the investment. Or suppose Tata has invested in Nigeria, oil fields. Oil fields, the Tatas have invested in Nigeria. The income generated by that investment in Nigeria will flow in the country, and that will be counted in our GDP. Because Tata is an Indian citizen. Indian investment is made in Nigeria, and therefore the income generated in Nigeria by that investment will be flowed back in our country, and that will be counted in GDP or GNP. Therefore, in GNP, what is important is who owns the assets. Who owns the assets? Not necessarily where it is produced, not necessarily where the production has taken place. Production may take place in India, may take place abroad, but issue is who owns the investment. ये clear है? Foreign investment में ये clear है? हाँ जी, हाँ जी. वो यहाँ से मान लिया, मैंने बताया ना, आप जर्मनी ने इन्वेस्टमेंट किया, बट दे हैव नॉट रजिस्टर्ड कंपनी देयर हियर, दे हैव ओनली मेड द इन्वेस्टमेंट. तो जो इनकम जनरेट होगी वो उधर जाएगी, वो जीडीपी में काउंट हो जाएगी, उनकी जीडीपी में, उनकी जीडीपी में. वही मैंने बताया था कि जो 20% शेयर आपने लिया इक्विटी का, तो 20% इनकम यहाँ से फ्लो आउट हो गई, तो वो यहाँ काउंट नहीं होगी, उनकी जीएनपी में काउंट होगी. ठीक है, ये क्लियर है कॉन्सेप्ट. तो जीडीपी में
where the production has taken place is important. In GNP में the ownership of the assets is important. Who owns the assets? That will determine whether the income generated from that asset will be counted in our GDP or counted in other country GDP. ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. हाँ, ऑनरशिप इज इम्पोर्टेंट, नॉट सिटीजनशिप. ऑनरशिप नॉट सिटीजनशिप. ये थोड़ी टाटा नाइजीरिया का सिटीजन हो जाएगा जाके. नो, ऑनरशिप इज इम्पोर्टेंट. ऑनरशिप वर्ड यूज करो, नॉट सिटीजनशिप. सिटीजनशिप लिख दो तो गलत हो जाएगा. ऑनरशिप है जी. डुअल सिटीजनशिप के केस में हमारे यहाँ डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ही नहीं. हाँ, नहीं, डुअल सिटीजनशिप का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इंडिया, जो इंडियन है वो इंडियन सिटीजनशिप पे होगा ना. उन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है. अब डिपेंड करेगा वो ब्रिटिश पासपोर्ट पे या नाइजीरियन पासपोर्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या हमारे पासपोर्ट पे कर रहे हैं. अब जैसे नीरव मोदी भाग गया यहाँ से हैं, या उनका अंकल भाग गया, वो वेस्ट इंडीज़ में सेटल हो गए जाके. अब वो वहाँ वेस्ट इंडीज़ में जाके वो इंडियन पासपोर्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे. क्योंकि ऑलरेडी आवर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आफ्टर देम. अगर उनको सिटीजनशिप वहाँ मिल गई तो वो उस पासपोर्ट पे इन्वेस्ट करेंगे. ड्यूअल तो मिल नहीं सकती. वेस्ट इंडीज में भी लॉ, कोई भी कंट्री ड्यूअल सिटीजनशिप दे नहीं रहा आजकल. You may hold the passport, but citizenship is different. Passport, holding a passport is different, citizenship is different. ठीक है. हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनके पासपोर्ट वहाँ का है, but they may not be treated as citizen of that country. तो सिटीजनशिप के लिए कुछ और एडिशनल रिक्वायरमेंट चाहिए उनको. फिर they have to follow. GDP, because FDI will be possible only when you register yourself here. It is clear. It is clear. It is clear. ठीक है, a concept clear सब. So we have defined the GDP, we have defined the GNP. GNP में हमने export minus imports ऐड कर दिया. Income is counted where the other incomes are counted. ठीक है. Now question is, how do we measure the GDP or GNP? Measurement of GDP and GNP is another important question. Measurement. पहले मैं आपको theory बता रहा हूँ इसकी, then we'll go to India's measurement. Measurement of GDP or GNP. I am using the term interchangeably now. GDP और GNP एक ही method है. Measurement or estimation, whichever you want to say. Estimation of GDP or GNP. Private remittances, अगर NRIs हैं बाहर और वो Indian citizens हैं, whatever money they are sending here, that will be counted in India's GDP. पॉजिटिव है, रेमिटेंसेज आ रहे हैं तो पॉजिटिव है. मान लिया हमारे बहुत सारे वर्कर्स दुबई में हैं, हर लेवल के वर्कर्स हैं, दे आर सेंडिंग लॉट ऑफ मनी बैक टू इंडिया इन द फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस. उनको हाँ जी, रेमिटेंस है व्हेन यू आर वर्किंग अब्रॉड समवेयर एंड सम पार्ट ऑफ इनकम यू आर ट्रांसफरिंग एज NRI to India. Remittance word is used only for NRIs. When you have got a status of NRI abroad, आप 3 महीने से ज़्यादा कहीं पे काम कर रहे हैं तो you are given the status of NRI. So some part of your income is being transferred to India in the NRI account. यहाँ NRI account different है. यहाँ आपको रेमिटेंसेस बाहर से आने हैं, NRI अकाउंट में ही आएंगे. नॉर्मल आपके करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको बेनिफिट दिए हैं सरकार ने. हायर इंटरेस्ट रेट है, उसको टैक्स फ्री है. तो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन लॉट ऑफ इंसेंटिव फॉर NRI अकाउंट. So they will transfer their income, surplus income in NRI account. Or from NRI account, the local people can withdraw.
So that remittances are positive income that is counted in India's GDP. Now, if they don't want to take the benefit of the government incentives, they can transfer directly in the local account, normal saving account. But they will not get the benefit. That will be taxed. That will be taxed by the government. Any income in your saving account, if it is earning any interest, that is taxable. In NRI account, if your savings are earning any interest, that is tax free. Everybody would like to transfer the income in the NRI account. तो टैक्स फ्री है आपको और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, तो इसलिए विल पीपल गेट द बेनिफिट ऑफ एनआरआई अकाउंट, दैट इज फैसिलिटी गिवन टू एनआरआई पीपल, एंड वो एक इंसेंटिव है टू ट्रांसफर मोर एंड मोर इनकम हियर. Remittances itself is not taxed, but the interest earned on the remittances are taxed if they are transferred in the normal saving account. Remittances as such will not be taxed here, because remittances are taxed by that government if they are taxing. So this is a part of their income earned there. वहाँ की गवर्नमेंट जो टैक्स के रूल होंगे उस हिसाब से ही मस्ट हैव पेड द टैक्सेस, तो यहाँ टैक्स नहीं लगेगा उसको. ये डबल टैक्सेशन की स्ट्रैटेजी हमारी ट्रीटीज हैं सारी सभी कंट्रीज से कि डबल टैक्सेशन इज नॉट अलाउड. इफ यहाँ से somebody is remitting the income abroad somewhere and he is guided by our tax rules and we have taken the tax on his income, and that country will not impose the further tax on that. It is direct tax, but it will not be imposed. Remittances are not taxed, but income generated by remittances in the form of interest income is taxable. If it is in the normal account. If it is the NRI account, government has given the tax free. The government is not charging any tax on the interest earned in the NRI account. सभी लोग NRI account में 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए रखते हैं. इनकम जनरेशन एनुअली इज क्वाइट हाई. आपका 8% भी अगर FD पे रेट है तो 1 करोड़ के ऊपर 8 लाख रुपए इनकम जनरेट हो गई एक साल में. 8 लाख पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर नॉर्मल अकाउंट में है, नॉर्मल FD है आपकी, इट विल बी टैक्स्ड. 33% टैक्स लगा देगी उसको. अगर वो NRI अकाउंट में है तो टैक्स फ्री है. एवरीबडी वुड लाइक टू टेक द एडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंसेंटिव्स. जैसे मैंने कहा था एक रूल है, पीपल ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. इकोनॉमिक्स का रूल बताया था ना आपको, पीपल ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स. तो इंसेंटिव सरकार ने दिया, लोगों ने फ़ायदा उठाया उसका. एवरी NRI हैज़ ए NRI अकाउंट इन इंडिया. उससे नुकसान तो कुछ है नहीं, उससे विड्रॉ कर लो पैसे नॉर्मल अकाउंट की तरह, यू कैन विड्रॉ. किस पे? नहीं, टैक्स क्यों लगेगा? मैंने बताया ना, इनकम पे कोई टैक्स नहीं है. इनकम इज ऑलरेडी टैक्स देयर. उस इनकम से जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है वो तो यहाँ जनरेट हुई ना आके, उस पर टैक्स लगेगा. उस पर टैक्स लगेगा. इंटरेस्ट इनकम मैंने बोला, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स लगेगा. अगर आपने NRI अकाउंट में ही रखी है वो इनकम, तो उस पर इंटरेस्ट इनकम पे भी टैक्स फ्री है सरकार की तरफ से. टैक्स फ्री है. अगर आपने वो इनकम को ट्रांसफ़र करके नॉर्मल सेविंग अकाउंट में डाल दिया तब टैक्स लग जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सेविंग बैंक में द इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल. आपने भी इतनी अगर आपके FD करा रखी है आपने, उस FD के ऊपर एनुअल टैक्स लगेगा. जितना इंटरेस्ट आप ले रहे हो उस पर, तो इंटरेस्ट विल बी टैक्स विल बी चार्ज. इसलिए FD का इंटरेस्ट जितना भी होगा उस पर टैक्स अगर देंगे आप, वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा. तो व्हाट काइंड ऑफ, देखिए अगर आपने NRI ने मान लिया 1 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिया NRI अकाउंट में, उसने 1 करोड़ की FD करा दी 3 साल के लिए,
मिनिमम। अब 3 साल तक वो विड्रॉ नहीं करेगा उसको, 3 साल तक फिक्स्ड हो गई। दैट 1 crore rupees will be used by the bank for investment purpose. That is the benefit. It means savings in the country has increased. When we count the total savings in the economy, we count household savings, we count corporate savings, we count government savings. Government savings is always negative. Government में कभी saving होती नहीं है, always fiscal deficit है वहाँ. Therefore, corporate savings and household savings are important. And these NRI accounts are part of the household savings. तो अगर आपने NRI अकाउंट में 3 साल की 5 साल की FD करा दी, हायर इंटरेस्ट रेट, टैक्स फ्री, and bank can use that money for investment purpose. That is the advantage, because investment is definitely channelized through savings. अगर सेविंग्स है तभी तो बैंक देगा लोन आपको। अब बैंक के पास रिसोर्सेज नहीं है तो कहाँ से लोन देगा? बैंक के पास रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? दो ही सोर्स हैं, सेविंग्स और देयर इंटरेस्ट earned on the loans. That is the true source of income for the banks. अगर सेविंग्स नहीं आ रही हैं तो इंटरेस्ट इनकम is not enough for financing further. So therefore, mobilizing more and more savings is necessary if you really want to enhance the level of investment in the economy. And this is one way of enhancing the rate of savings or level of savings in the economy. हाँ जी, क्या कह रहे हो? हैं? NRI अकाउंट क्रिएट करेगा, NRI स्टेटस चाहिए ना पहले आपको। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा यू आर एम्प्लॉयड समवेयर अब्रॉड एंड एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 3 months, तब आपका NRI अकाउंट खुलेगा। और NRI अकाउंट में दूसरी प्रॉब्लम ये है, यू कांट डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ रुपी। उस NRI अकाउंट में फॉरेन एक्सचेंज में ही डिपॉजिट हो सकता है। आप दुबई से आ रहे हो, दुबई में आपका जॉब है तो रियाल में ही एक्सेप्ट करेंगे हम NRI अकाउंट, रुपए में नहीं। अगर आप यूके में हो तो पाउंड में एक्सेप्ट करेंगे, आप यूएसए में हो तो डॉलर में एक्सेप्ट करेंगे। तो दो एडवांटेज हमारे पास हो गए, फॉरेन एक्सचेंज भी आ रहा है और सेविंग्स भी आ रही है। क्योंकि बैंक तो रियाल में लोन नहीं देगा ना, बैंक तो रुपये में लोन देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास अल्टीमेटली। आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। All banks who are mobilizing the resources in terms of foreign exchange, they will be ultimately transferred to RBI. RBI में foreign exchange reserve बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है NRI अकाउंट और नॉर्मल अकाउंट में। वन, remittances will be accepted only in the foreign currency, and टू, बाकी इंसेंटिव सरकार ने दिए हैं यहाँ पे, ये होने चाहिए। रुपये में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रुपये में कराना है तो नॉर्मल सेविंग बैंक में कराओ, वहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि हाँ, NRI अकाउंट में मनी विल बी रिसीव्ड बाय द बैंक ओनली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, नो मैटर इन विच कंट्री यू आर अर्निंग, उस कंट्री की करेंसी में एक्सेप्ट करेगा। यस, नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स विल राइज, क्योंकि अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैटर्स। कितने आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज इज यूज फॉर मेकिंग द पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स। वो कहाँ से आएगा जब तक अर्न नहीं करोगे? दो ही सोर्स हैं अर्निंग के आपके, आइदर थ्रू एक्सपोर्ट्स और थ्रू इन्वेस्टमेंट और थ्रू रेमिटेंसेस। थ्री सोर्सेज आर अर्निंग, थ्री सोर्सेज आर देयर फॉर अर्निंग द फॉरेन एक्सचेंज। तो रेमिटेंसेज आ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल राइज। बैंक का मंथली डाटा आता रहता है आरबीआई का कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने हो गए, इतने हो गए, इतने हो गए। तो दे विल गिव यू द डाटा अबाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। वो उनकी पॉलिसी होगी। ये नहीं है कि हमने टैक्स फ्री कर रखा है तो यूके भी टैक्स फ्री करेगा, वो जरूरी नहीं है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नेशनल पॉलिसी। ओके, मेजरमेंट। पहले मैं आई डिस्कस विद यू द थियोरिटिकल मेथड्स, जो थ्योरी में पढ़ाते हैं नॉर्मली बीए में, कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी।
and then I'll go to the India's methodology. और India's methodology important इसलिए है कि recent methodology which is adopted by the government involves some controversy. It involves some controversy. वो important है UPSC एग्ज़ाम के लिए, वो आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि government has accepted the controversy is there and government has recently set up a committee, high level committee to resolve the controversy. कमेटी की रिपोर्ट आएगी, मेंस तक आ जाएगी आपके, तो वो भी पढ़नी पड़ेगी. फिलहाल I will stop about the where the controversy ends. This is the controversye about the methodology adopted by the present government. That I will discuss. So theoretically, very briefly, ये important नहीं है, but आपको जानना जरूरी है. 3 methods are there in theory: income method, product method, and the expenditure method. 3 methods are there to measure the GDP or GNP. 3 methods are there. In theory, we normally, economics theoretically 3 methods are available. And in तीनों methods से GDP or GNP should come out the same. After some modifications, it should come out the same. Income method, product method, expenditure method. So what is the income method? How we measure through income method? This is somebody was asking yesterday, what is factor cost? If we measure the GDP from income method, that is called GDP at factor cost. If we measure the GDP using the income method, that is normally called factor cost, GDP at factor cost. Income method में क्या है कि we try to estimate the income of each factor used in the process of production. We try to estimate income of each factor used in the process of production. Suppose the factors of production FOP are 4, normally they are 4: land, labor, capital and entrepreneur. 4 factors are there. 4 factors are there. They are used in any process of production. Of course, today we are also taking into account technology as a factor. For technology, we are counting in capital. We are not considering that an additional factor. If technology is coming, we count it in the capital. Therefore, the land, labor, capital, entrepreneur, these are the 4 factors which are used in the production process of any commodity. Clear? Now, statement ये है, as per the income method, we call GDP at factor cost 1. As per the income method, summation of the income earned by each factor used in the process of production will give you GDP, which is called GDP at factor cost. Which is called GDP at factor cost. ये आप समझ लो, मैंने बताया ना, सब कुछ लिखा हुआ है, पीपीटी में लिखा हुआ है, और जो चैप्टर मैंने बनाया आप लोगों के लिए उसमें भी लिखा हुआ है. तो आपको ये लिखने की यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है. क्लास में अगर आप लिखने में मगरूर हो जाओगे तो यू हैव टू सैक्रिफाइस विद द अंडरस्टैंडिंग. प्रैक्टिस. वो बता रहा हूँ मैं आपको ना, that will be for everybody. Which you are asking me, I am telling you.
Now the four factors are there. What is the cost a entrepreneur or a business unit will incur in hiring the land, in hiring the labor, in hiring the entrepreneurs, that is managers. What is the cost? When you are hiring the land, either you are owning the land or you are taking the land on rent. Know your possibility. If you are only taking the premises on rent, then you are paying rent. Rent is the cost of the land you are using. Even if you are owning the premises yourself, then you are foregoing the rent. अगर आप उस पर अपनी फैक्ट्री ना लगाते, अपनी यूनिट ना लगाते, तो उसको रेंट पे देते किसी को. Therefore, rent you are giving or rent you are foregoing, both are counted here. Therefore, every piece of land which is used in the process of production is paid in the form of rent. Is paid in the form of rent. Even if the premises is owned by you, you will have to, in your cost of production, will show the market rent of the land, market rent of the premise, even if you are owning it. But you have to show in the balance sheet, this is the rent, market rate of the rent. Rent और अगर लीज पे है तो लीज अमाउंट काउंट होगी. अगर ऑनरशिप आपकी है या ऑनरशिप किसी और की है तो रेंट काउंट होगा. नहीं तो लीज पे थोड़ी दे रहे हो आप. लीज पे तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ना. लीज विल बी फॉर 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, 99 ईयर्स. वो लीज तो ज़्यादातर लीज इज नॉट साइंड बाय इंडिविजुअल्स. लीज इज साइंड बाय द इंस्टीट्यूशन. आप किसी को लीज पे नहीं दे सकते. आप हमेशा रेंट दे पाओगे, क्योंकि रेंट आप हो सकता है कि 3 साल का रेंट, 4 साल का रेंट, 5 साल का, बट दैट विल बी रेंट. लीज पे विल बी गिवन बाय द इंस्टीट्यूशन. तो लीज में क्या है कि ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड. लीज व्हेन वी, फॉर एग्जांपल डीडीए, दे आर यू आर बॉट ए डीडीए फ्लैट ऑन लीज. उन्होंने 99 ईयर्स की लीज दे दी आपको, तो 99 ईयर्स तक आप रह सकते हो उसमें, लेकिन उसकी ऑनरशिप डीडीए के पास ही है. यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द फ्लैट. व्हेन यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द फ्लैट, you cannot give anybody else on the lease. So there you can only charge the rent from the others. So therefore, there is a difference between lease and rent. Lease only institution normally gives. Individual don't give the lease. Lease is not for the short term. 3 साल, 2 साल के lease नहीं होता. Lease charges you have to pay. Lease charges are very very nominal. Nominal इसलिए कि long term lease है, इसलिए 8,000, 7,000, 6,000 ये lease charges हैं. और रेंट तो 6,000 नहीं है ना. रेंट तो लैक्स में है, थाउजेंड्स में है. तो रेंट इज मोर प्रॉफिटेबल एंड बेनिफिशियल फॉर द पर्सन टू गिव ऑन रेंट रादर देन ऑन लीज. अगर आपकी ऑनरशिप आपके पास है तो यू कैन ऑलवेज गिव ऑन रेंट. लीज पे भी अगर आपके पास है तो आप रेंट पे ही दोगे. लीज पे नहीं दे सकते. लीज कैनॉट बी ट्रांसफर्ड. लीज कैनॉट बी ट्रांसफर्ड अनलेस यू गो टू द डीडीए एंड surrender your lease, then it can be transferred on lease to somebody else. So lease cannot be transferred, but you can give your lease property on rent. You earn the income on that. उस पर रोक नहीं है. वो एग्रीमेंट साइन होगा सेपरेट. ओके, रेंट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लैंड. लेबर क्यों? ऑब्वियसली यू आर पेइंग द वेजेस एंड सैलरीज. इसमें दोनों तरह के लेबर शामिल हैं. Blue collar workers as well as white collar workers, both are included here, wages and salaries. And capital is interest. Interest paid or interest accrued, दोनों. अगर आपने अपना पैसा लगा दिया तो ये इंटरेस्ट एक्रूड. अगर आप उस पैसे को ना लगाते तो बैंक में रखते, कहीं भी रखते, तो यू वुड अर्न द इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट फोरगोन विल आल्सो बी काउंटेड. ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है जो हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अगर आप इस पैसे को इन्वेस्टमेंट ना करते तो कहीं और यूज होता.
तो इन्वेस्टमेंट जो आपने करा उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है विच यू हैव लॉस्ट, दैट इज काउंटेड एज ए कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, अगर आपने कैपिटल रेंट पे लिए और लोन पे लिए, ऑब्वियसली रेंट पेड इज द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, रेंट इंटरेस्ट पेड बाय यू इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्लियर, and whatever remains is the profit, entrepreneur's profit, profit earned by the entrepreneur who is coordinating all these. Who is the entrepreneur? Entrepreneur is coordinating all the factors together. He is arranging the premises, he is arranging the capital, he is hiring the workers, he is hiring the professionals, whatever he requires he is hiring, he is coordinating, and he is the entrepreneur, and he earns the profit out of it. Profit may be positive or negative, depends upon that is counted here. So therefore, if we take in the economy as a whole, what is the rental value, what is the interest paid, what is the wages and salary paid, how much profit is earned, then summation of that will give you GDP, and that GDP is called GDP at factor cost. Apart from this, in some of the countries including India, we provide some subsidies to the factors. Subsidies are given to the factors. For example, for MSME, government has reduced the rate of interest. For MSME sector, government has reduced the rate of interest of the bank loan. That is interest, that is called interest subvention, interest subsidy. The difference is paid by the government. अगर मान लिया मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है या 10% है कमर्शियल लोन पे, एंड MSME को हम 6% पे दे रहे हैं, 4% who is bearing, that is borne by the government. Interest subsidy is given by the government. Similarly, government is giving a lot of welfare schemes for the workers. That is also a subsidy. That subsidy is also added in the factor cost. All kinds of subsidy given by the government to any of the factor is also counted. Therefore, the GDP at factor cost will be the factor cost plus subsidies, if any. जरूरी नहीं है ये हो, if any. If subsidy is given, if any, is also added to the factor cost. That will give you GDP at factor cost. इसमें देखेंगे कोई टैक्स शामिल नहीं है. No tax is counted here. Therefore, GDP at factor cost is basically the value of the product at the factory gate till the product is finally produced and is at the factory gate to sell out. Factory gate में जो cost है, that is given by the GDP at factor cost. हर product की factor cost is given by this method. And we sum up all the products together, that will give you the country GDP at factor cost. To estimate this, every product, the CSO is our office, Central Statistical Office, उसे 50-60 हज़ार लोग लगे हुए हैं different field में. उनका काम यही है, they collect the data on this. एक particular product की factory gate पे क्या cost है, they bifurcate it, land, labor, capital, etc. After having discussion with the entrepreneur, क्या क्या है, वो data will go to CSO, and CSO compiles for the country as a whole, and they publish GDP at factor cost. Clear? So no taxes are included in GDP at factor cost. That's why it is called GDP at factor cost. But once the product go out of the factory gate, taxes are imposed. हर फैक्ट्री में, हर यूनिट में एक्साइज इंस्पेक्टर है. An excise inspector sees the product, and as per the government regulation or order, he imposes the excise duty, or he imposes sales tax if it is applicable. अब दोनों खत्म हो गए, GST आ गया. They impose GST, जो गवर्नमेंट का रेट्स हैं, depending upon the kind of product, they impose the GST. The moment the product goes out of the factory, it is imposed the tax.
Indirect, this is called indirect tax. नहीं, टैक्स तो मैंने बोला कि टैक्स विल बी इम्पोज ओनली व्हेन द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड ऑफ। देखिए फैक्ट्री क्या करेगी, फैक्ट्री होलसेलर को बेचेगी, होलसेलर से रिटेलर पे जाएगा, अब कंज्यूमर के पास आएगा, है ना। तो फैक्ट्री गेट तक तो कोई टैक्स है नहीं उसके ऊपर, कोई टैक्स नहीं है, कोई सब फैक्ट्री कॉस्ट शामिल किया हमने, ओनली फैक्ट्री कॉस्ट एंड प्लस सब्सिडीज इफ एनी, वो ऐड कर दिया उसमें, वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई। अब अगर हम सारी प्रोडक्ट्स मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का फैक्ट्री गेट पे वैल्यू निकाल दें, जो CSO का काम है, and we add up all together, that will give you GDP at factor cost. Clear? That will give you GDP at factor cost. But for your information, 2015 के बाद ये मेथड हमने डिस्कार्ड कर दिया. No one is using this method anymore now, including India. 2015 तक we were estimating GDP at factor cost, GDP at market prices, GDP at base year prices. 2015 तक, 15 के बाद हमने ये GDP at factor cost हटा दिया. We are no more estimating GDP at factor cost. तो हम जब डिस्कस करेंगे इंडियाज methodology, I'll mention there also. This is the income method. Income method. So we are focusing on income earned by the factors used in the process of production. But प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है? प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, only 10% is the organized sector, 90% is the informal sector. और informal sector के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है. They don't maintain the accounts, they don't maintain the records. Problem comes in India, how to estimate the factor cost in informal sector. That is the major issue. और इनफॉर्मल सेक्टर का जो ऑनर है वो बताएगा भी नहीं आपको इजीली, वो सोचेगा टैक्स लग जाएगा, उसका रिकॉर्ड है नहीं, अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, therefore very difficult. That's why the factor cost is always considered to be underestimated. Very difficult to estimate the factor cost in the informal sector. जैसे अब बाहर ठेले लगा के खड़ा है, मे बी अर्निंग 500 रुपीज़ पर डे, प्रॉफिट इसका होगा, उससे पूछो कि तुम्हारी फैक्टर को उसका पता ही नहीं, इतना उसने इन्वेस्टमेंट लगाया है, इसको रेडी में खरीदा होगा, रेडी खरीदी होगी, सब कुछ पता ही नहीं, कितनी वेज इनकम पता नहीं, नो रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड. एंड 90%, एज आई सेड यस्टरडे आल्सो, कि 52% इज सेल्फ एम्प्लॉयड as per the NSS survey. So 52% of the persons are self-employed. They are informal. आप घर में अपने दुकान, जो कमरा सड़क की तरफ निकल रहा है उसमें दुकान खोल ली, यही हो रहा है हमारे यहाँ आजकल. उस दुकान में जनरल मर्चेंट के सामान रख लिए 2-4, उसका रिकॉर्ड तो है नहीं कोई भी, क्या पता लगेगा उसका कि हाउ मच इज द फैक्टर कॉस्ट? नोबडी नोज. That's why it is very difficult. इंडिया में ही प्रॉब्लम है, because of informalization of the sectors. It is very difficult to estimate GDP correctly, and we have to make certain assumptions. If you made the wrong assumptions, wrong GDP figure will be there. And this is the controversy in 2015. We made the wrong assumption. Wrong assumption led to the inflated GDP. यही लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया. Therefore, it depends upon the availability of the data. Correctness of the GDP depends upon availability of the data. And when data is not available, you have to make assumptions. You have to make imputations. आपको अपना अंदाज़ा लगाना पड़ेगा. अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, अंदाज़ा सही भी हो सकता है. 99% वो गलत होता है, कोई सरकारी काम है, इसलिए 99% वो GDP इन्फ्लेट होकर आती है.
So what assumptions you make is essentially determining the size of the GDP, because आपका large sector is the informal, both in services, industry. Agriculture is 100% informal. Agriculture is 100% informal. Therefore, very difficult to estimate the GDP in India. ये problems हैं. कभी-कभी ये prelim में पूछ लेते हैं कि the problems in estimation of GDP in India is 1, 2, 3, 4. फिर combination बना दिए उनके. So if you know all the issues involved in GDP estimation, you can easily find out which are the correct answers. Okay, now the product method. Product method will give you this is also called value added method. Value added method. In the product method, here the important thing is the definition में है only final goods and services. Final goods and services are to be considered. Only final goods and services are to be considered. Only final. Final, when I am saying final, it means which is sold in the market as a final product. That will be considered for valuation in the GDP. And the input used in producing that final output or final product will not be counted in GDP. For example, your car, the best example to understand, या कोई भी automobile. When the automobile industry, say Hyundai is manufacturing the car, they are buying steel, they are buying the electric mechanisms, they are buying tires, everything they are buying from the other companies. They are the inputs for the Hyundai industry. For Hyundai factory, these are all the input cost. And final product is the car. And final product comes to the market for sale. Therefore, whatever input cost the Hyundai has used in producing a particular car will not be counted in GDP. We will only count the value of the car in GDP. Input cost, intermediate cost is not counted in GDP. Whatever value is added by the Hyundai company over the input cost will be counted. Will be counted. Will be counted. You are getting it? हाँ, मैं देख रहा हूँ उसको. You are getting it? ये concept समझ में आ जाना चाहिए. ये important है जी. Read out my questions. ये आपके लिए लिखा हुआ है क्या? अच्छा. पढ़ पा रहे हो आप? हाँ. अच्छा, रेंट एंड लीज इज डिफरेंट. मैंने बताया ना बेटा, लीज डजंट इन्वॉल्व ऑनरशिप. लीज इज नॉमिनल चार्जेस चार्ज बाय द लेसर टू यू. यू आर ए लेसी, आपको प्रॉपर्टी मिली. लेसर इज द इंस्टीट्यूशन विच हैव गिवन यू द प्रॉपर्टी. You cannot sold your house if you are selling to someone on lease. You cannot. When you sell the house, you transfer your ownership to the person who is buying. You cannot give on lease. The lease is normally given by the institutions or the development authorities who are constructing the houses and selling to the households for living. उन्होंने आपको 99 years के लिए परमिशन दे दी, आप इसमें रहो. अब नॉर्मल चार्जेस जो आप इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर चार्जेस, हाउस टैक्स पर आप पे करते रहो, ये रहो. लेकिन ऑनरशिप अथॉरिटी के पास है. अथॉरिटी में लाइक टू ट्रांसफर ऑनरशिप इवन बिफोर 99 years और आफ्टर 99 years. After 99 years, lease may be extended, or the authority will think that now it is the right time to transfer the ownership. They will transfer you. They will charge something from you, and the ownership will be transferred. Lease will be over. So lease is normally given
permission to utilize the property, the way for which it is constructed. Lease की ये property है. Lease is given to you for use of the property for which it is constructed. You cannot use the property for any other purpose. आपने residential flat लिया है, उसमें दुकान नहीं खोल सकते आप. As per the lease conditions, if somebody complained, you will be penalized by the authority. So lease is this. So lease doesn't constitute the ownership. And rent, when you are owner, you are an owner. And individual cannot give the lease to anybody else. Owner will only transfer the ownership. आप अपना घर बेचते हो, रजिस्ट्रार के पास जाते हो रजिस्ट्री कराने के लिए, he will only transfer the ownership. आपके नाम से उसके नाम पे चली जाएगी रजिस्ट्री. बात खत्म. So this is the difference between lease and rent. Lease and rent. When I am buying or taking the premise on rent from somebody, he may charge rent from me, not lease. Lease is a nominal amount. Is maybe nominal amount. This authority is charging just for the maintenance. But rent is the income. Lease is not the income. Lease is only maintenance charges. Rent, when I am charging rent on my property, I am charging rent as my income. और मैं 10 दुकानें खोल के आज के धंधा दिल्ली में बना हुआ है, 10 दुकानें खोल दो, रेंट पे चढ़ा दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना इनकम आ जाएगी आपको. That is the rental income. That is not a lease income. Clear? So this is the difference we take. But when we take into account the income, we normally take rent into account. Rent, जी. हाँ जी. नहीं, नॉर्मली जो अथॉरिटीज़ हैं वो लंबी लीज देते हैं, इसलिए वो लीज चार्जेस बहुत कम रखते हैं. नॉर्मली दे गिव the 50 years, 99 years or 30 years. They will not give you lease for 3 years. Lease is always for the long term, so that you feel comfortable कि मेरा ही घर है, लीज पे दे रहा हूँ, लीज चार्जेस दे रहा हूँ इसको, कोई बात नहीं. Ultimately it will be transferred in my name at some future date. You are very sure about it. You will be taken away from that house or property only when you not following the lease rules. When somebody complains, DD अपने आप नहीं आएगी आपके घर, आपके आस पड़ोस वाले कंप्लेंट कर देंगे तो वो आ जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है. Only in that, if you are a perpetual defaulter, then they may cancel the lease. Only in that situation. Otherwise, lease will never be cancelled if you are following the lease rules. तो प्रोडक्ट मेथड में हम थे, इसमें इशू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. Therefore, the cost of inputs and cost of intermediate goods are excluded from the inclusion in the GDP. An example दे रहा था कार का. अब कार पे इनपुट कॉस्ट हुई, सपोज कार की वैल्यू 1 लाख रुपए, 1 लाख वैल्यू ऑफ द कार, simple example, and input cost is 70,000. 30,000 is the value added by the Hyundai. So this 30,000 will be counted in GDP. 70,000 will not be counted because 70,000 is the transfer of the cost from some other industry to the Hyundai. This is a tire example, best example will do. If the MRF tire is selling the tires to Hyundai, that will be considered as an input cost. And the tires sold to Hyundai company by MRF will not be counted in calculation of GDP. Clear? But when the MRF is selling the car to the consumer directly, आपके पास कार है, you want to change the tire of your car, and आपने 4 टायर खरीदे मार्केट से, MRF के शोरूम से, that will be counted in GDP because that is the final consumption of the tire by you, and Hyundai is not finally consuming them. Hyundai is using them as an input in manufacturing of the car, and therefore the car में जो टायर की कॉस्ट है,
that will not be counted. Therefore, value added is counted. Therefore, in all the products, value added by that company will be counted. Value added will be counted. Only value added will be counted. Whatever value is added, that will be counted. That will be counted. Because 70,000 is counted by somewhere else. Otherwise, it will lead to double counting. आपने भी टायर की कॉस्ट शामिल कर ली और टायर इंडस्ट्री ने भी टायर बेचा, उसने भी शामिल कर दिया. Double counting will be there on particular tire. That's why we say that only final products comes to the market will be considered for GDP. GDP. And for every product, every service, we have to calculate the value added. We have to calculate the value added. And therefore, the summation of the value added of all the XI sectors 1 to n will give you the GDP at market price, because they are counted in the market current prices. They are not counted in the base year prices. They are counted in the current prices, prices prevailing in the market today. That is counted. And in all these goods and services sector, we counted the value added. And this value added summation will give you the GDP at market price. Product method. GDP at market price. It will give you GDP at market price. GDP at market price, MP, at market price or current price. ये clear है सबको? Only value addition is taken care of. इसलिए यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन पूछती है, which of the following items are not included in calculation or estimation of GDP? उसमें लिखेंगे टायर एज ए इनपुट यूज्ड, ये नहीं लिखेंगे टायर एज ए फाइनल गुड्स. अगर उसे लिख दिया टायर एज ए फाइनल गुड्स, देन इट विल बी काउंटेड. इफ दे राइट टायर एज ए इनपुट, इट विल नॉट बी काउंटेड. So you have to read all the 4 options given. मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको इस तरह के, so that आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस तरह की क्वेश्चन आ सकते हैं. So you will be able to know how the GDP by this method is calculated. Final goods and services. है? हाँ. हाँ. MRF. MRF will be counting in their as value addition. They will be counting. तो हम वहाँ से ले रहे हैं ना उस वैल्यू को, इंस्टेड ऑफ हुंडई. हुंडई ने क्या किया? हुंडई ने वैल्यू ऐड किया सिर्फ, और सारे इनपुट्स को एक जगह असेंबल कर दिया. असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, दैट इज कार. बट एवरीथिंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय हिम. Everything is not produced by him. If you are buying the car as a final consumer, tire as a final consumer from the market, that it will be counted. जैसे you are buying 4 tires from MRF showroom or any other C8 showroom, किसी भी showroom से खरीद रहे, so that will be counted. So you are a final consumer of the tire. आपने अपनी कार में चारों टायर बदलने हैं, आप गए शोरूम में 4 टायर खरीद लिए, तो वो फाइनल कंजम्पशन हो गया. वो किसी के थ्रू नहीं है. यू आर द फाइनल कंज्यूमर, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, दैट विल बी काउंटेड इन GDP. बट इफ टायर इज सोल्ड टू हुंडई, इट विल नॉट बी काउंटेड. नो, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन हुंडईज कैलकुलेशन. हुंडई ने जो वैल्यू एडिड की, ओनली दैट विल बी काउंटेड. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अल्टीमेटली इंक्लूडेड फ्रॉम द MRF साइड. गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं MRF साइड से भी टायर को इंक्लूड कर लूँ और फिर हुंडई में भी कर लूँ, डबल काउंटिंग हो गई. तो हुंडई ने तो 1 लाख की कार बेची, लेकिन 1 लाख में इनपुट कॉस्ट शामिल है. ही इज एडिंग द इनपुट कॉस्ट ओवर एंड अबव, ही इज एडिंग समथिंग.
So whatever he is adding something over and above the input cost, that is a value addition. And that value addition is counted. अब MRF है, MRF is buying the raw rubber from the farmers. So we will not be taking the cost of raw rubber in the MRF manufacturing. तो raw rubber को हम काउंट करेंगे जब farmers की इनकम लेंगे. अगर मैं वहाँ भी raw rubber काउंट कर लूँ और MRF में भी काउंट करूँ, डबल काउंटिंग हो. Wherever a product is used as an input, it will not be counted. Wherever product is used for final consumption, it will be counted. ये आपको ध्यान रखना है. जो भी प्रोडक्ट फाइनल कंजम्पशन के लिए मार्केट में आया, दैट विल बी काउंटेड. जैसे मैंने कहा टायर मार्केट में है, यू आर एज ए फाइनल बायर, फाइनल कंज्यूमर बाइंग द टायर, दैट विल बी काउंटेड. जैसे आर्टिक एग्जाम्पल और ए बेस्ट एग्जाम्पल, wheat is produced by the farmers and wheat is sold to the flour mills. शक्ति भोग और भगवती भोग और कौन से भोग बहुत सारे आ रहे हैं. दे आर जस्ट व्हीट खरीदते हैं, आटा बनाया, ब्रांड नेम लगाया और कट्टे में 5 किलो 10 किलो बेच दिया मार्केट में. दिस इज द ट्रेंड. अगर मैं शक्ति भोग के का वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, आई विल नॉट काउंट द व्हीट परचेज बाय हिम, बिकॉज व्हीट परचेज I will count the farmer's income. When I count the farmer's income, I will take into account the wheat production. But wheat sold to the flour mills. In the flour mills calculation, we will not count the cost of the wheat. अगर flour mills ने 100 रुपये का wheat खरीदा, 130 का बेचा, flour बना के उसका आटा बना के, 30 rupees will be counted. 100 rupees input cost will not be counted. अगर मैं उसी वीट को एज ए कंज्यूमर मार्केट से खरीद रहा हूँ, तो दैट विल बी काउंटेड, आई एम ए फाइनल कंज्यूमर. आई एम ए फाइनल कंज्यूमर. फ्लोर मिल इज नॉट ए फाइनल कंज्यूमर. फ्लोर मिल इज कन्वर्टिंग दैट प्रोडक्ट इनटू सम अदर प्रोडक्ट एंड देयरफॉर एडिंग द वैल्यू, एंड दैट वैल्यू एडिशन इज काउंटेड. अदरवाइज इकोनॉमी में chaos हो जाएगा, हर जगह डबल काउंटिंग हो जाएगी. GDP many times larger दिखाई देगी आपको. Therefore, we have to be careful in using this method. We have to see the product which I am taking into GDP is a final product or is an intermediate product. That decision has to be made by the numerator who is collecting the data. He will use his discretion. ये final product है कि intermediate है. Intermediate का we will not count. Final product that will be counted. ये इतना concept clear है. Therefore, this is some of the value added is counted. Some of the value added is counted in all the sectors, and that value addition is the GDP by product method. And value addition is counted at the current prices always. No numerator or anybody is interested in base year prices. They always count at the current prices, and that is always give you GDP and market price. And the third method which we normally use, ये theory है, अभी इंडिया पे तो हम पहुँचे नहीं. Expenditure method. Under the expenditure method, as I said, we only count the final expenditure made by various economic stakeholders. Various economic stakeholders. Who are the stakeholders in the economy? The households, individuals. We are spending money and we are households, and we always make the consumption expenditure. We always make the consumption expenditure. So therefore, consumption expenditure is by the household, by households. This is normally shown by C. This is normally shown by C. Then the expenditure done by the investors. They are making capital investment. That is also expenditure. Either by they are investing their own money or they are taking a loan from the bank, but they are making expenditure. So investors expenditure is also counted. Investors are always make the capital investment. They are not making the consumption investment or consumption expenditure. They are making the investment, that is called I, C plus I.
जी हो गया, तो 2 मिनट और लूँगा इसको काम करो. This is the consumption expenditure. Then government is also making the government expenditure on final goods. Government is buying the goods from the market. Government, for example, Rafale खरीद रही है, final product they are buying. Government is buying from local people the cotton to make the uniform of the our military people. Government and the defense ministry is not producing the cloth, they are buying from the market. Therefore, government is also making expenditure on final goods. So, government expenditure is counted, that is shown by G. And plus, if you are estimating GNP, then the export expenditure and minus imports. Minus imports. आगे आ नहीं रहा है. Minus imports. That is also counted. If you are estimating GNP, अगर GNP नहीं करो, GDP करो तो यहीं तक है. P plus I plus G. Minus imports, exports and imports. Exports बनाने में भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो ना, फाइनल गुड्स, तो टोटल कितना आपने बेचा बाहर, दैट इज द फाइनल एक्सपेंडिचर. फाइनल गुड्स एक्सपोर्टेड बाय अस and expenditure made by the foreigners are counted. And imports by final goods imported is minus term because we have to pay it out, that will be excluded. Only final goods, exports of the final goods, imports of the final goods. अगर हम input import कर रहे हैं, that is not counted. अगर input export कर रहे हैं, that is not counted. Final goods exported, final goods imported. They are counted if you are estimating GNP. But if you are estimating GDP, then you stop here, C plus I plus G. So final expenditure, this method and previous method is the same. There we are counting the value of the final goods, and the consumer is, or investors are spending on the final goods. They are spending exactly what is the valued by the market, and market valued as per the product method. And we are spending the same thing. We are buying the atta. You are paying 130 rupees per 5 kg to Shakti Bhog. So your expenditure, either I count your expenditure or I count the value addition by that. It is the same thing. So therefore, the final expenditure done by the consumers, final expenditure done by the investors, final expenditure done by the government is counted, is counted here. Okay, clear? ये theoretical 3 methods हैं. But what methodology we are adopting for India? That is important. That I will be discussing with you. Half an hour more required, then the GDP is over. So वो इसलिए important है क्योंकि controversy has generated. And you need to understand what is the controversy. Clear? वो discrepancy होती है कि always errors are involved. Because मैंने बताया ना 60,000 enumerators हैं all over the country. They are collecting the data. The errors and omissions are always there. जब हम individuals को add करते हैं तो some errors and omissions are likely to be committed. Government take into account 5% errors and omissions. वो लिख देते हैं अलग से कि errors and omissions are acceptable up to 5%. वो always, it is always there. This is estimation. This is not a actual product. This is estimate. When you estimate using some statistical method, the errors are always bound to take place. That is mentioned separately. Errors and omissions are counted or mentioned. आप 5% plus minus ऊपर नीचे कर सकते हो. 5% error is taken care of. Clear? तो ये है. कोई क्वेश्चन है भाई ऑनलाइन वालों का? इनकी आवाज़ तो आती नहीं है. कोई नहीं है यार, इनका कुछ सोल्यूशन नहीं है.
देखिए आवाज़, देखिए जैसे मैं राउज में देख रहा था, राउज में क्या है कि स्क्रीन का पूरा उनका ही आता ही नहीं आते, ये वाला पोर्शन आता ही नहीं। ऑल द स्क्रीन दे आर फेसेस दिखते हैं, और जो बोलता है ना उसका पूरा फेस आ जाता है स्क्रीन के ऊपर। नहीं, इनको बोलो ना कैमरा ऑन करके रखें, आपने क्या रखा है क्या इनको? यार ऑनलाइन पीपल, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द इंटरेक्टिव सेशन, यू प्लीज ऑलवेज स्विच ऑन योर कैमरास। आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, जैसे ऑफलाइन में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यू विल ऑल्सो इंटरेक्ट, आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि राइटिंग द क्वेश्चन एंड expecting me to respond immediately may not be possible. Sometime gap is there, and you ask the question when I am quite ahead of that issue. So therefore this gap will always be there. If you keep writing questions here, better है you switch on your cameras and actively participate. Please do it. आपके लिए बहुत beneficial होगा वो, आपको ऐसे लगेगा जैसे you are sitting in the class. आप ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपके लिए फिर आपके ऊपर है। बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ फ्रॉम टुमारो नेक्स्ट क्लास स्विच ऑन योर कैमरास, दिस पोर्शन विल बी ओमिटेड फ्रॉम द स्क्रीन, योर फेसेस विल बी देयर एंड हुसएवर विल स्पीक, उसका फेस स्क्रीन पे आएगा, आवाज़ भी उसकी क्लियर आएगी, फेस भी आ जाएगा, तो यू विल बी एज इफ यू आर सिटिंग इन द क्लास। वो मैं चाहता हूँ, दैट टाइप ऑफ इंटरेक्शन शुड बी देयर। ओके, प्लीज डू इट। इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, यू डू इट। और किसी का फेस इतना ख़राब तो है नहीं कि देखने में दिक्कत आएगी, वो सब एक जैसे ही हैं, सब हम सब एक ही फैमिली से हैं, इसलिए डोंट वरी। तो प्लीज़ स्विच ऑन योर कैमरास। थैंक यू भाई। आई एक्सपेक्ट टुमारो देयर इज नो क्लास, ऑफ है, मंडे इज ऑफ है ना बेटा? ट्यूसडे को आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू मैनी ऑफ यू दी क्वेश्चंस, ठीक है? जितना आप जल्दी लिखेंगे उतना ही आप क्लास के साथ रहेंगे। आई विल सर्टेनली मूव इन द नेक्स्ट क्लास ऑन पॉवर्टी, तो आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक शुरू हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये पीछे रह जाएगा। तो ऑलवेज मूव विद द क्लास, दो एक क्लास आगे पीछे चलता रहेगा। ये नहीं है कि जब मैं कर रहा हूँ इंडस्ट्री तो आप असाइनमेंट दे रहे हो ग्रोथ का, वो आपके लिए मुश्किल है, यू विल बी लैगिंग बिहाइंड, ठीक है? प्लीज डू इट।